In today's fast paced, hectic lifestyle, we often forget that good sleep, a healthy diet, and regular exercise are the three basic pillars of healthy living. We tend to ignore the signs that our body tries to give to us without realizing the gravity of the matter and the potential problems that it could cause. Good evening and namaskar. I am Dr. Akash, and with me is Professor Santosh Prabhu, Chief Neurosurgeon and Chairman of WINS Hospitals, Kolhapur. In today's live session, we will help you understand the link between the importance of good sleep and its effects on overall health, and the link between sleep and stroke. This topic has been in the news in recent times after the revelation by Mr. Nitin Kamath, the co-founder of Zerodha investment platform. He took recently to social media to share the shocking news of him having suffered a mild stroke and that he will be away from all kinds of work for the next 6 months. Now, it was shocking because Mr. Kamath is a fitness enthusiast who regularly runs marathons and does other fitness activities, doesn't miss a day at the gym, and leads a very healthy lifestyle, then why did he suffer a stroke so early in life? So, we will be starting the live session now. If you have any questions, please feel free to ask them in the chat box and we will answer them for you. I will start off by telling you about the stages of sleep. Sleep has four stages, the first three of which are categorized as NREM or non rapid eye movement sleep. These are the stages which last for about 90 minutes after you go to sleep, and they in that time your body rests and rejuvenates. The body and brain heals in the NREM phase. After that comes the REM phase, which is the phase where there is dreaming. Your eyes rapidly move here and there, which is why it's called the REM stage. This is very important for building new neuronal connections and in converting short-term memory to long-term memory. Now, the effects of lack of sleep on brain health. Lack of NREM sleep leads to low attention and concentration, irritability, and bad moods. It leads to neurotransmitters getting imbalanced in the body, and this has an increased risk of depression. Lack of REM sleep causes memory disturbances and difficulty in learning new things, which is why it is always important for young people in school and college to have a good night's rest the day before going for an exam. Now, the lack of sleep has effects on other parts of the body, like it causes weight gain due to hormonal imbalances. Again, it causes gastroesophageal reflux or gastritis, which causes a load of other problems. Then another thing is snoring. Now, most we know that we know a few people who snore a lot, and it's impossible to sleep in the same room as them. But did you know that snoring may be really bad for you? The quantity and the it is proven when you snore a lot, you may have a disease called obstructive sleep apnea, and there are many research papers proving the direct connection between the snoring and increased risk of cardiovascular events and stroke. Now, Professor, would you like to explain the links between sleep, stroke, and other habits? See, if I may say so, sleep and stroke are bedfellows. Basically, when you do not get a good quality sleep, a kind of hormonal surge occurs in your body, and all those hormones, such as cortisol and catecholamines, which are responsible for shooting up of blood pressure, these hormones are released in the system, and these can produce an increase in the blood pressure, cause an inflammation in the blood vessels in the going to the brain, and in turn produce reduced blood flow to the brain. This can produce what is called as an ischemic stroke, or a stroke where enough blood does not reach the brain. So it is absolutely mandatory
This is something which has been neglected actually, and it is absolutely mandatory that we all have a good night's sleep. Otherwise, the risk of developing a stroke is almost increased by 15 to 20%. So, this is extremely important that we have a good night's sleep. Now, there are a few questions from the audience. Mr. Narayan has asked, अति व्यायाम म्हणजे काय आणि त्याचा आरोग्याला काय परिणाम असतो? See, कसरत करना या व्यायाम करना ये शरीर के लिए अच्छी बात समझी जाती है, मगर ज्यादा जरूरत से ज्यादा कुछ लोग दे गो ओवरबोर्ड और जरूरत से ज्यादा कसरत करते हैं, दे become fitness freaks, and there is a syndrome called as an it's the syndrome is called as OTS, overtraining syndrome, जिसमें excessive exercise की वजह से certain harmful things can happen. हम सब ने देखा है कि we have learnt of many celebrities, film actors, comedians such as Raju Srivastav collapsing in the gym while performing heavy exercise and passing away. So all these unfortunate things happen because जब आप जरूरत से ज्यादा कसरत करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर शूट अप होता है, साथ ही में हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, बिकॉज द हार्ट रेट गोज अप, हार्ट की जो फिलिंग रहती है, हार्ट को खून से भरना पड़ता है फिर ही वो आगे पंप कर सकता है, मगर हार्ट अगर बहुत तेजी से पंपिंग करता है तो उसमें खून की फिलिंग ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड आगे पंप सही मात्रा में नहीं होता है, एंड दिस कैन इन टर्न कॉज लेस ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एज वेल एज द हार्ट, एंड दोनों मिलके सडनली इलेक्ट्रिकल abnormalities हार्ट में पैदा करते हैं, एंड द हार्ट गोज इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज fibrillation and may proceed to developing a cardiac arrest also. So अगर आप फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, यू मस्ट gradually start exercise, and if you get symptoms such as chest pain, neck pain, pain in the back, pain in the arm, some nausea like feeling, breathlessness while doing any exercise, you must immediately stop. वो एक्सरसाइज को आपने बंद करना चाहिए और अपना खुद का प्रॉपर कार्डियक चेकअप करके कुछ नहीं है तो ही हार्ट के डॉक्टर से क्लियरेंस पाके तो ही एक्सरसाइज को शुरू करना चाहिए. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट that an exercise is good for the brain and the heart, but over exercise can be harmful और आपको it can even kill you, आपकी जान को भी खतरा पैदा कर सकता है. Mr. Divekar has asked a question, can excessive sleep also be a risk factor? So yes, sleeping 6 to 8 hours a day is considered optimal, and in that it should be uninterrupted sleep. Not only the quantity but also the quality of sleep matters, and there is also upcoming research that shows that if you sleep more than 9 hours 10 hours a day consistently, that also has the same effects as lack of sleep, and it may predispose you to a stroke. So there has to be a fine balance between these things. Now somebody had asked how much minimum sleep does an adult require. So that is about as you grow older, the requirement of sleep decreases, and a younger person may require 8 to 9 hours of sleep, and that may be completely normal. But as you grow older, the body doesn't require as much sleep, the NREM sleep decreases, and even up to 5 hours should be enough. Now somebody has asked, how do we identify if somebody is having a stroke? Would you like to elaborate, Professor? Yeah, see, it is very important to know when somebody close to you, either you yourself or somebody in your family or somebody you are with, develop some strange symptoms. आपको पता कैसे चले कि ये स्ट्रोक है? तो उसके लिए एक नेमोनिक है. द नेमोनिक इज बी फास्ट, बी ई एंड फास्ट, FAST. इसमें से बी का मतलब है बैलेंस. अगर किसी इंसान को बैलेंस संभालने में तकलीफ हो रही है, इफ ही इज हैविंग प्रॉब्लम मेंटेनिंग हिज बैलेंस और ही इज फीलिंग अनस्टेडी, that is one warning that he could be getting a stroke.
E in the B stands for eyes. अगर आपको सडनली आंखों के सामने ब्लरिंग हो जाती है, यू हैव डबल विजन, डिप्लोपिया, या एक आंख से आपको दिखना बंद हो जाता है, सो दिस कुड बी इंडिकेटिव ऑफ गेटिंग अ स्ट्रोक. फास्ट में से F स्टैंड्स फॉर फेस, फेशियल एसिमेट्री. अगर एक बाजू का चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा लगने लग जाता है, तो दैट इज अगेन एन इंडिकेटर कि आपको स्ट्रोक हो रहा है. A stands for arms. आर्म्स मतलब हाथ. आपने दोनों किसी के हाथ ऐसे पकड़े और एक हाथ ऐसे नीचे जाने लग जाए, उसको बोला दोनों हाथ ऐसे पकड़ो, और एक हाथ ऐसे धीरे धीरे नीचे जाने लग जाए, तो वो दिखा रहा है आपको कि उस साइड की ताकत कम हो रही है, एंड द पेशेंट मे बी हेडिंग फॉर ए पैरालिसिस और अ स्ट्रोक. S stands for speech. अगर किसी की जबान लड़खड़ाने लग जाए या हैवी हो जाए या स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लेफ्ट साइड के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. एंड द लास्ट T इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट स्टैंड फॉर टाइम, वक्त, बिकॉज इट इज सेड दैट टाइम इज ब्रेन. आप जितना समय स्ट्रोक होने के बाद डिले करते हैं, हर एक मिनट को अपने ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, 20 लाख न्यूरॉन हर मिनट मर जाते हैं. तो आपको तुरंत एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है अगर स्ट्रोक हो रहा है. तो एक बार आपको शक हो जाए कि आपको स्ट्रोक हो रहा है, तो आपको तुरंत एक ऐसे काबिल हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहां पर सारी फैसिलिटीज एक रूफ के अंडर ट्रीट करने की अवेलेबल हो. बिकॉज देर इज अ थिंग कॉल्ड एज अ विंडो पीरियड. विंडो पीरियड मतलब स्ट्रोक होने के बाद में ट्रीटमेंट शुरू करने तक जो पीरियड है, इसको विंडो पीरियड कहा जाता है. एंड दिस पीरियड हैज टू बी लेस देन 3.5 hours. 3.5, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे. 3.5 घंटे में आपकी डायग्नोसिस होके आपको ट्रांसपोर्ट होके उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहां पर सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो, जहां पर राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स अवेलेबल हो, जहां पर जरूरत पड़े तो थ्रोम्बोलिसिस मतलब क्लॉट बस्टर्स मेडिकेशंस अवेलेबल हो, अच्छा आईसीयू स्ट्रोक यूनिट अवेलेबल हो. फॉर एग्जांपल हमारा जो विंस है कोल्हापुर में, इसमें इस ये सारी फैसिलिटीज एक ही रूफ में अवेलेबल है, एंड 24/7 दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल. तो आपने अपने घर के बाजू में इस किस्म का हॉस्पिटल आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए जहां आप तुरंत चले जाओ. Uh, so, Mrs. Bhageshri has asked, stroke में सर्जरी का कुछ रोल है क्या? So, yes, सबसे पहले जैसे मैंने बोला 3.5 hours में आप पहुंच जाते हैं, तो आजकल एक इंजेक्शन अवेलेबल है जिसे क्लॉट बस्टर या थ्रोम्बोलिसिस करने वाला मेडिसिन या इंजेक्शन कहा जाता है. ये देते ही जिस क्लॉट की वजह से आपकी ब्रेन की सप्लाई बंद हो गई है, उस क्लॉट को वो मेडिसिन डिसॉल्व करता है और उस ब्लड वेसल को वापस से ओपन करता है, जिसकी वजह से ब्रेन को जाने वाली ब्लड की सप्लाई रिस्टोर हो जाती है और सप्लाई वापस शुरू हो जाती है. अगर आप ये 3.5 घंटे के अंदर करते हैं, तो तकरीबन कोई डैमेज के बिना आप उस स्ट्रोक से बाहर आ सकते हैं. कमिंग टू सर्जरी, यस, सर्जरी का भी रोल है. कैसे है? प्राइमरी इस्केमिक स्ट्रोक में सर्जरी का कोई रोल नहीं है, मगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपको बड़ा स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन का बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाए, तो जैसे वक्त जाता है दैट ब्रेन स्टार्ट स्वेलिंग अप, उसमें सोजन आती है, एंड इट स्टार्ट्स प्रेसिंग ऑन इटसेल्फ, और पेशेंट के होशो हवास कम 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 होने लग जाते हैं. एट सच टाइम्स a surgery may be needed to be carried out in order to give space for that brain to expand. इसको हमारे लैंग्वेज में decompressive craniectomy कहते हैं. तो ये this surgery might be required in a small minority of patients, but you must ensure that if required, this surgery is available at the center that you have chosen to get treated. Secondly, इसी सवाल का अगला हिस्सा, एक बार आप इस्केमिक स्ट्रोक से बाहर आ जाए, तो द कॉमन कॉज इज यहाँ जो अपनी कैरोटिड आर्टरी जो मेन ब्रेन को सप्लाई खून का ले जाती है, उस आर्टरी में ब्लॉक्स हो जाते हैं. उसको मेडिकल लैंग्वेज में प्लाक कहते हैं.
कैल्शियम और चर्बी की डिपॉजिट हो जाती है एंड द आर्टरी बिकम्स स्मॉलर। तो उस प्लाक को निकालने के लिए एक कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी नाम की सर्जरी करनी पड़ती है। एंड इट कैन गिव यू, हार्ट में जैसे आप बाईपास करते हैं उसी किस्म का ये एंड आर्टरेक्टमी की सर्जरी ब्रेन के लिए की जाती है। Mr. Prashant from Chennai has asked, what is the best time for a good sleep? Which 8 hours? There is a concept called circadian rhythm. There is a natural rhythm to the body, not only the human body, but for every living thing. With sunrise, we are supposed to wake up, and soon after sunset, we are supposed to go to sleep. But with the advent of electricity and lights, we tend to stay up later and later, and that affects a lot of things. That also, there is something I told in the beginning. It's not only the quantity of sleep, it is also quality of sleep. आप जो 6 घंटे सोते हैं वो हेल्दी स्लीप होनी चाहिए. So उसके लिए कुछ precautions ले सकते हैं. One is you need to go to bed relatively early. By 10 o'clock is what is practically possible and which is also healthy for the body. And you should be waking up soon after sunset, which is around 6 a.m. Now, बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि हमें नींद नहीं आती इतना जल्दी, क्या करें? उसका भी कारण यही है कि हम फोन पे रहते हैं. फोन हैज अ लॉट ऑफ ब्लू लाइट. सो दिस ब्लू ब्राइट लाइट कंफ्यूजेस द बॉडी एंड जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है. देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन. वो ना सिक्रीट होने की वजह से नींद भी कम हो जाती है, इसलिए लेट होते जाता है. So there are a few tips to have better sleep hygiene. Few of them are avoid bright lights after 8 p.m. at night. Avoid white lights. शाम के बाद बस yellow lights रखिए. That will ensure that your melatonin is secreted and circadian rhythm अच्छा होगा. And avoid screens after at least 9 p.m. बेड में जाते ही सोशल मीडिया चेक करना, we should try to avoid that. That will definitely lead us to have a better sleep. Actually, it is said that Netflix is one of the major causes of producing strokes in people. आप रात को बहुत देर तक स्क्रीन टाइम सिनेमा देखते हो या नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखते हो एंड योर सर्कैडियन रिदम गेट्स कंप्लीटली डिस्टर्ब, तो रात को स्क्रीन टाइम अवॉइड करना बेस्ट है. मिस्टर अर्षित has asked, जर आम्हाला वाटलं की समोरच्या माणसाला स्ट्रोक होत आहे तर आम्ही काय करायला पाहिजे आणि काय नाही करायला पाहिजे? Would you like to? Yeah, I think I have already partially answered it कि स्ट्रोक का सस्पिशन होते ही आपने ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ सब फैसिलिटीज है. और जैसे मैंने बोला, it is possible to reverse a stroke if you reach the hospital in time using clot buster drugs. So this is what you should do. This is called as the window period, and this window period ideally is 3.5 to 4 hours. I would also like to add that certain strokes, even when they are outside this window period of 3 to 4 hours, can be treated by a method called mechanical thrombectomy. ये बस एक इंजेक्शन नहीं होता, it is a little more invasive method. उसके लिए cath lab लगती है, but इसके लिए window period is much larger. It goes up to 24 hours. Now keep in mind that this is only for certain types of stroke, and that will be diagnosed at the time that a patient will arrive at the hospital. बट उसमें भी अगर वो विंडो पीरियड में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के विंडो पीरियड में रहा विच इज 24 आवर्स, देन देयर कैन बी अ वेरी गुड रिजल्ट एंड लॉट ऑफ ट्रीटमेंट, लॉट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रोक कैन बी रिवर्स्ड. नाउ समबडी हैड आस्क्ड, आफ्टर स्ट्रोक होने के बाद आगे ट्रीटमेंट क्या है रिकवरी के लिए? वुड यू लाइक टू आंसर? देखिए, ये बेसिक ट्रीटमेंट ये आजकल थ्रोम्बोलिसिस है, उसके बाद में ब्लड थिनर मेडिकेशन शुरू करते हैं. फिर आपके जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें भाई कहीं आपका कोलेस्टेरॉल का लेवल बढ़ गया है, लिपिड प्रोफाइल आपका डीरेंज है, तो उसको करेक्ट करने के लिए मेडिकेशंस देने पड़ते हैं. साथ ही में आफ्टर योर मेडिकेशन पार्ट इज टेकन केयर ऑफ एंड द इंटेंसिव फेज जिसमें आपकी कंडीशन बिगड़ने की संभावना है वो पास हो जाती है. इसका मतलब आप आईसीयू से बाहर आ जाते हो. देन ऑल्सो देयर इज अ लॉन्ग पाथ टू अंडरटेक. उसमें एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है जो हमारे विंस कोल्हापुर में भी अवेलेबल है. उसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन कहा जाता है.
इसमें पेशेंट को एक चेंबर में डाल के हाइपरबैरिक, दैट मीन्स हाई प्रेशर, 2.5 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जाता है, which increases the saturation of the oxygen in the body and in the brain also, and some cells which are very critically injured because of the stroke and as yet are not dead can be salvaged. उनको इस्केमिक पेनम्ब्रा के आइडलिंग न्यूरॉन्स बोला जाता है, और उनको सेव करने से स्ट्रोक की सिवियरिटी को 100% कम किया जा सकता है. So hyperbaric oxygen is one modality. One more important thing is neuro rehabilitation. एक बार पेशेंट को थोड़ी सी कमजोरी आ जाए तो रिहैबिलिटेशन के माध्यम से उस कमजोरी को रिकवर करने में मैक्सिमाइज करना पड़ता है. इसके लिए अच्छे अच्छे कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है. इवन एट आवर सेंटर वी आर हैविंग दिस कंप्यूटराइज्ड फिजियोथेरेपी एंड रिहैब ऑप्शंस अवेलेबल. सो उनको इस्तेमाल करके you can maximize the recovery from strokes. So somebody has asked, if you get addicted to sleeping pills, जिसको छोड़ा तो एंजाइटी हो जाती है, तो क्या करना है? So now sleeping pills are something that you should take very carefully. They are only prescription drugs and वो ऐसे ही नहीं खाने चाहिए, क्योंकि they are usually a temporary measure and it is given only when it is indicated to certain patients. But all in all, sleeping pills से नींद लाना is not the correct way. You will not get a good sleep for a long time. There are certain things you can practice. जो मैंने बोला, blue light avoid करो, dim light में रहो 8 बजे के बाद, get some exercise, preferably in the morning or even in the evening, तो body थक जाएगी. And eat 2 hours, at least 2 hours before you plan to sleep. Finish your meal. ये सब ensure करेगा कि आपको नींद अच्छी आए और नींद लंबी रहे. Throughout the night you sleep. So it is not, you should not rely on sleeping pills for all these things. One of the things that your doctors might prescribe is the hormone that I mentioned, melatonin. ये हार्मोन जो होता है वो एज के साथ साथ कभी कभी कम होता है, और इसी वजह से जो एल्डरली लोग होते हैं उनकी नींद 2-3 बजे खुल जाती है. तो इसके लिए वो हार्मोन की सप्लीमेंटेशन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हो तो उससे बहुत अच्छा स्लीप अच्छी लंबी आ सकती है, एंड दैट इज अ सप्लीमेंटेशन. सो दैट इज इफ गिवन फॉर द करेक्ट इंडिकेशंस, नॉट कैन बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्गर टर्म. There's a good question here. The question is, what is called as a wake up stroke? बहुत अच्छा सवाल है, because it has been found that almost 33% of the strokes occur during the sleep period, of which around 15-20% are when you go to bed and the majority are when you are waking up in the morning. अब ये morning में क्यों strokes ज़्यादा होते हैं? Because during the REM sleep that Dr. Akash talked about, there is rapid eye movement and there is a rise in blood pressure. Similarly, body में बहुत सारे ऐसे changes आते हैं जिसकी वजह से ब्लड की कोएगुलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, मतलब ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, it becomes thicker, and the heart abnormalities can also occur because of this rise in blood pressure. Similarly, जो अपने नेक में ये जो प्लाक्स बने हैं ये रप्चर भी हो सकते हैं ड्यूरिंग स्लीप, एंड पार्टिकल्स कैन गेट एम्बोलाइज्ड टू द ब्रेन. तो सवेरे उठने पे या उठने के समय पे होने वाले स्ट्रोक को वेक अप स्ट्रोक कहा जाता है, एंड इट इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, द ऑटोनॉमिक सिस्टम, जिसमें से ये स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कैटेकोलामाइंस, कॉर्टिसोल ये पैदा होते हैं. इनकी लेवल नेचुरली, इनकी मात्रा मॉर्निंग में ज्यादा होती है, एंड ऑल दीज कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रोक्स इन द अर्ली मॉर्निंग. इनफैक्ट ब्लड प्रेशर अपना जो रहता है बाय इवनिंग, इट इज सेड दैट बाय 10% ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है नॉर्मली. ये इट इज कॉल्ड एज अ डायरनल रिदम, मतलब 24 घंटे में कुछ समय ज्यादा रहता है, कुछ समय कम रहता है. सो दिस फ्लक्चुएशन नॉर्मल ऑफ ब्लड प्रेशर इज एग्जैजरेटेड if you do not sleep well, if you have had a restless night, if you are stressed while sleeping. All these factors contribute to this wake up stroke. So now we need to wrap up. I will take the last few questions. There is a good question. What are the precautions to avoid stroke? And does
alcohol consumption increase the chances of stroke at night? So to answer the second question first, yes, have try to avoid having alcohol at all, or definitely make sure you hydrate well, because जो alcohol related strokes रहते हैं वो usually dehydration की वजह से होते हैं. Lot of people tend to take a lot of alcohol without taking enough water. तो उसके वजह से ब्रेन गाढ़ा हो जाता है, ब्रेन में खून गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, और वो जो नर्व्स और वेसल्स है उनको ब्लॉक कर देता है. सो प्लीज अवॉइड दैट. एंड देयर आर अ फ्यू things you can simple things that you can do to avoid stroke. One is eat a healthy diet, avoid spicy, oily food. Try to eat homemade food as much as possible. It is the healthiest and the most fresh food. Then exercise regularly, at least 4 times a week, as far as practically possible. Then practice sleep hygiene, like we just talked about. And also at the same time, when you exercise, make sure you don't over exercise. सबकी अपनी limit होती है. There is a study that says about 90 to 120 minutes of exercise, moderate exercise in a week, is good enough to maintain good cardiovascular health. So you can start off by following that, and then slowly, as you get more experienced, you can increase your exercise. Couple of things I would like to add is देखिए, there is a thing called as stroke in young people. आजकल we are seeing that younger and younger people are developing stroke. People in their late 20s, early 30s. So ये demographic profile जो stroke की है, जो पहले senior लोगों को होती थी 55, 60, 65, वो धीरे 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 नीचे आके it is now occurring in young patients who are 30s, in their 30s also. इसका कारण है poor lifestyle, lack of exercise. You know, many young people are having diabetes, high blood pressure. So I would very strongly recommend that jitne log hai in their late 20s, they have an annual health checkup and make sure they don't have blood pressure. If they have, to control it. डायबिटीज अगर है तो उसको कंट्रोल में रखिए, अच्छा डाइट खाइए, एंड लीड ए हेल्दी लाइफस्टाइल, अवॉइड स्ट्रेस. 15% of the strokes now occur in young patients. So please take care of yourselves. So I think we should wrap up. Yeah, I think we have discussed the very important part of this stroke, which was highlighted by Dr. Akash, and it was brought to the fore because of the stroke which occurred in Mr. Nitin Kamath of Zerodha. And nobody is immune from this. ये समझना जरूरी है कि मुझे कुछ नहीं होगा. In our Kolhapuri language they say malakai होते हैं. So that feeling you should take away and concentrate on having a good lifestyle. So to summarize, young लोगों को stroke हो सकता है, उसके risk factors हमने देखे हैं. One of the factors that has not been highlighted till now is sleep and the stress that goes with it. अगर stroke होता है उसको diagnose कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया है. और अगर diagnosis या suspicion stroke के ऊपर आपकी needle आती है तो तुरंत hospital में जाके well equipped hospital में जाना, like विम्स हॉस्पिटल कोल्हापुर, ये बहुत जरूरी है जहां पर सारी facilities हो. और it is necessary to reach there in that window period of 3.5 to 4 hours. But by ill luck, if you miss that window, highly equipped hospitals can still take care of your stroke up to a period of 18 hours to 24 hours. इतना मैं आपको समरी में कहना चाहूँगा, और मैं आपसे आशा करता हूँ और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी अपनी हेल्थ की फिक्र करिए, बिकॉज स्ट्रोक इज अ वेरी डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर, और जिसको हो जाता है उसको और उसकी पूरी फैमिली को वो तबाह कर देता है. सो आई विल रियली अर्ज ऑल ऑफ यू टू रन rather maintain a good healthy lifestyle and be aware of simple factors like lack of sleep leading to stroke. Thank you very much. So remember, in case you suspect somebody is having a stroke, remember the lines: be fast. So it was lovely talking to all you people on this live platform. Hope to see you guys again soon. Thank you so much for your time.